This is the second part of the Algebra 2, and in this part we will discuss solving equations with roots and powers. First we will understand what are equations, then roots, then powers. Understand it carefully, you can do whole exercise. Now what is this equation? Equation is simply the statement of equality having one or more variables. For example, I am writing x plus 1 equal to 0. I am writing y minus 2 equal to 4. I am writing z plus 3 equal to 7. You can see here in every expression here equality sign is there. And in equality sign on the left side there is an expression. Here it is x plus 1. Here it's y minus 2, here it is z plus 3, and on the right side of equality sign it is 0, it's 4, it is 7. So this equality sign first makes it the statement of equality. Then we should have at least one variable. You can see here the one variable is x, here the variable is y, here the variable is z. So we can say this is the equation, this is the equation, this is the equation. Why? What is the criteria to be the equation? First equality sign should be there, and on the left side there should be expression, on the right side there should be expression, and there should be one variable in either of the expressions. जैसे कि हम बोल सकते हैं कोई सा भी स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी होता है जब भी उसमें इक्वलिटी साइन होती है, एंड इक्वलिटी साइन के लेफ्ट साइड में भी एक्सप्रेशन रहना और राइट साइड में भी एक्सप्रेशन रहना और किसी भी जगह वेरिएबल रहना. फॉर एग्जांपल आई विल राइट 12 इज इक्वल टू x minus 1. This is also the equation. First, this is the statement of equality because equality sign is there, and also it contains the one variable x है इसमें, variable है इसमें. Then so this satisfies this criteria. We can say this is the equation. So ये भी equation है, ये भी equation है, ये भी equation. If I will write 2 is equal to 1 plus 1, this is not the equation. Even though it is the statement of equality, but it is not the equation. Why it is not the equation? Because it does not contain the variable. If I will write 100 equals to 200 minus 100, once again I can say this is not the equation. Although it is the statement of equality, but it is not the equation. Why it is not the equation? Because there is no variable. And one more thing is there. Here you can see power of the variable is 1. Power of variable is 1. Power of variable is 1. When there is nothing written, we can say the power is that time 1. Sometimes we have x square plus 1 equal to 0. X square minus 1 equal to 0. And sometimes we will have z square is equal to 2. Sometimes we have y square plus 1 equal to 0. And you can see here from these equations, these are also the equations. Statement of equality hai, and there is one variable x hai variable, x hai variable, z hai variable, y hai variable, and statement of equality. These all are called the equations. But what is the difference? In these equations power of variable is 1. In these equations power of variable is 2. In every equation power of variable is 2. When we have power of variable 1, इनको बोलते हैं linear equation. क्या बोलते हैं इनको? Linear equation, क्योंकि इनमें power of variable जो होता है that is only 1. और इनको बोलते हैं quadratic equation. क्या बोलते हैं? Quadratic equation. Why they are called quadratic equations? Because इनमें जो power of variable होता है that is 2. So when we have the power of variable 2, those equations are called quadratic equations. When we have power of variable 1, those equations are called linear equations. Now we will see the second thing from this. I hope that you have understood this concept. If I have x minus 1 equal to 0, I need to find the solution of this equation. Solution of equation क्या होता है? The value of the x, that is called the solution of equation. हम x लिखेंगे equal to minus 1 को ट्रांसपोज करेंगे तो plus 1 बन जाएगा. 0 plus 1, so x equal to 1. So x equal to 1
is the solution of the equation. So जो 1 है that is the solution of equation. Next I will write here x minus 2 equal to 4. I will write here y. In this equation the value of the variable is the solution. I will write y equals to 4 minus 2 को transpose करते हैं, it will become plus 2. Y equals to 6. So this is called the solution of. We will take the other example. That's x square plus 2 equal to 6. अब देखो यहाँ पे ये इक्वेशन हम सॉल्व करने जा रहे हैं. आई विल राइट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू इस प्लस 2 को ट्रांसपोज करते हैं 6, ये बन जाएगा माइनस 2. सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इज 4. अब यहाँ पे अंडरस्टैंड हमें करना है कि ये जो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 हम कर रहे हैं, व्हाट इज इट, व्हाट डज इट मीन, हाउ टू डू इट. हमें एक्स का वैल्यू निकालना है. यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करना, व्हेन वी आर ट्रांसपोजिंग this power 2, what will happen. यहाँ पे आपको remember करना है एक चीज, on transposing square it becomes square root. It becomes a square root with signs plus minus. जब भी हम ट्रांसपोज करते हैं स्क्वायर को, ये क्या बन जा रहा है, स्क्वायर रूट प्लस माइनस. दैट इज x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 बट प्लस माइनस. फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस. स्क्वायर को, जब पावर स्क्वायर को हम ट्रांसपोज कर रहे हैं, ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है स्क्वायर रूट. व्हाट एक्चुअली इज दिस स्क्वायर रूट. ये जो स्क्वायर रूट है इसका मतलब होता है पावर इज 1 by 2. Actually what is happening, x square is equal to 4. x is equal to, जब हम 2 को ट्रांसपोज कर रहे हैं, ये बन जाता है 4 to the power 1 by 2. नहीं, यहाँ पे पावर 2 है, so when we are transposing it is becoming power 1 by 2. but ये power 1 by 2 जो रहता है, this power 1 by 2, what is actually this? This is actually nothing but square root. So I can write square root of 4. Square root of 4 is nothing, it is 4 to the power 1 by 2. So when we are transposing 2 power 2 to the other side, it will become 1 by 2. If I have x cube, if I will transpose it to the other side, it will become 1 to the power 1 by 3. It's like that. Here you should understand, or generally you can write, you can remember this. On transposing square it becomes square root with plus minus. So यहाँ तक ये क्लियर हो गया, ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 4 है, ये क्लियर हो गया कि हम क्यों यहाँ पे स्क्वायर रूट ले रहे हैं. नाउ कमिंग टू दिस प्लस माइनस, ये जो प्लस माइनस है ये कैसे आ गया. नाउ वी हैव टू लुक ऑन दिस. फर्स्ट लेट मी सॉल्व इट. x इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2. सो x इक्वल्स टू प्लस 2, x इक्वल्स टू माइनस 2. यहाँ पे x के दो वैल्यूज निकल रहे हैं. यू कैन सी हियर x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल 6. यहाँ पे x स्क्वायर था, इसीलिए x के दो वैल्यूज निकले. दीज आर कॉल्ड सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन. इनका दूसरा नाम भी है, इनको बोलते हैं रूट्स ऑफ इक्वेशन. सो x के यहाँ पे इस इक्वेशन के रूट्स कौन कौन से हैं, प्लस 2 एंड माइनस 2. यानी दो रूट्स इसके solutions है. Here you can see this is only one solution. Here you can see here it has two solutions. So we can say the linear equation has one solution, quadratic equation has two roots or two solutions. You got it? Now we will check here why there is plus minus. I will give you the simple example. If I will write x square equals to 1. If I am going to solve it, I will write x equal to plus minus square के बदले square root of 1 when I am transposing. X equals to plus minus 1 because square root of 1 जो होता है that's 1. So x equal to plus 1, x equal to minus 1 are the roots of the equation. X square equals to 1. So हम इसको सॉल्व कैसे कर रहे हैं, you should understand it what we are doing. जिस स्क्वायर को स्क्वायर रूट बना रहे हैं वो भी प्लस माइनस के साथ. ये प्लस माइनस क्यों लिख रहे हैं हम, क्यों x के दो वैल्यूज है, प्लस एक वैल्यू प्लस है, एक वैल्यू माइनस है. लेट्स चेक. हम यहाँ पे चेक करते हैं इस इक्वेशन में so that you will understand.
I have equation x square equal to 1. When I will take x is equal to plus 1, I will take x equal to x square equal to, I will take plus 1. So plus 1 square that is equal to 1. So जब मैंने x का वैल्यू 1 डाला, प्लस 1 डाला, ये 1 के बराबर आ गया. So equation got satisfied. Now x square equal to, जब मैं x का वैल्यू minus 1 डालूंगा, minus 1 whole square that is also 1. So ये जो x का वैल्यू 1 भी डाला, माइनस 1 भी डाला, तो आंसर मेरे को सेम आ गया. नो अदर नंबर, आप कोई सा भी नंबर डाल दो यहाँ पे x का वैल्यू, कभी ये नहीं आएगा इसके बराबर अदर देन 1 एंड माइनस 1. सो वी कैन से देयर आर टू वैल्यूज ऑफ द x which satisfies the equation. यानी ये दो वैल्यूज x के हैं जो हम इसमें डाल रहे हैं, तो हमें आंसर बराबर आ जा रहा है. That is why we are taking here plus minus. Similarly, you can see here when you will put x is equal to 2 plus 2 here, you will get 6. Let's check here. Let's check so that you will understand clearly. X square plus 2 equals to 6. पहले हम x का वैल्यू प्लस 2 ले लेंगे, दैट इज 2 स्क्वायर प्लस 2. ये किसके बराबर आएगा, 2 2 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 हो गया ये. Now we will take x equal to minus 2. So minus 2 whole square plus 2. Minus 2 whole square that is 4 plus 2 equal to 6. So x के दो वैल्यूज है, plus 2 and minus 2 है, जहाँ पे हमें ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है. That means when we are putting here in place of x plus 2, we are getting answer 6. When we are putting minus 2, we are getting answer 6. So these are the two roots of the equation. So whenever you have x square in the equation, जब भी आपको x square होगा equation में, at that time you will have the two solutions, and that two solutions are called the two roots of the equations. That two solutions are called the two roots of the equations. यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ. You should remember this thing. If you want, you can remember. If you don't want, then leave that. अगर हमारे पास x square plus 1 equal to 0 रहेगा, so x square equal to plus 1 इधर आ जाएगा, it's minus 1. So x equal to plus minus root minus 1. जब भी स्क्वायर रूट में माइनस आता है, स्क्वायर रूट के अंदर, यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट के अंदर माइनस 1 आता है, इसका वैल्यू जो होता है, दिस इज इमेजिनरी नंबर, इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर. What is this called? Imaginary number. So this type of equation, जब भी स्क्वायर रूट में माइनस 1 आता है, माइनस 2 आएगा, कोई सा भी नंबर which is containing the minus, that time equation will not have real roots. No real roots, उसके पास no real roots होंगे. No real roots. You should remember this thing, because sometimes you will get a question like this. That time you should say, at your level, you will say there is no root for the equation. And in the in the inter classes, you will see it is called the iota. Actually, iota minus root 1 is called the iota, but that is the higher level concept. Here is there is no deal in this class with that concept. So what the things you should remember, you should understand this, repeat this video and understand this concept. On the basis of this concept, whole exercise, that's exercise 4 is there, that is only based on this concept. When we have the two roots, when we have only one root, or when we have only one solution, when we have two solutions, why we are taking the plus minus, why we are taking the square root. This concept I have fully explained in this video.